So we have done string constraints. We have done wedge constraints, and I just want to do a couple of questions before we move ahead. So question number 1 is find the acceleration of the wedge. All surfaces are smooth and movable. Both masses are same. I'll give you 5 minutes to solve this. नहीं पार्थ नहीं मैंने बोला था।
नहीं शिवेन, जीरो कैसे होएगा भाई दीक्षा, मूवेबल है ना, वेज मूव कर रहा है, क्या हो गया तुम लोग को, सुबह की आदत पड़ गई है क्या? नहीं, गलत है चेतन। Nobody else? और किसी ने नहीं वर्कआउट किया? Only 5 people. Okay, chalo. You take 5 more minutes, but you do it. Right? The steps are drawing the FBD, and then writing F is equal to MA, and then applying the constraint equation. नहीं, गलत, गलत, हार्दिक। नहीं आ रहे हम। नहीं, हाँ हाँ, आराम से करो, आराम से करो, इसमें कोई जल्दी नहीं है, मैं और भी क्वेश्चंस दूंगा। You have to understand this one and then do the next one also. बाकी लोग
ना अनीश गलत है, नहीं पार्थ गलत है, ना चलो देखो अब मैं कर रहा हूँ. I'll do it. So the first thing that we have to do is draw the FBDs, and FBDs will look like हाँ महक ऐसा कुछ सही तो लग रहा है, पता नहीं correct है. How many of you have this correct? Please type yes. How many of you got this correct? This is the FBD. Right. So FBD is the most important part, and if you have done this, then you have sort of about 70 to 80% of the question you've already done. थोड़ा सा मैथ्स बचता है. अब ये जो wedge है, what can you tell me about the wedge? What can you tell me about the acceleration of the wedge? Can we yeah, so we should be able to have a very solid uh, we should be able to have a very solid prediction about the wedge, and that is that it will move horizontally. And this is not a coincidence. I mean, I'm not guessing. I know that the wedge and the floor are in contact with each other. So I will draw a dot on the wedge, a dot on the floor. I will join these two dots with a straight line, and I know that the acceleration of the wedge and the acceleration of the floor along the straight line must be same, and since floor is stationary, therefore the acceleration of the wedge along the vertical direction must also be zero, and therefore the wedge can only move horizontally, right? Now for small m, I have absolutely no idea what is going to happen, except for the fact that I know that it is going to come down, right? It is going to come down. So what I will do is I will make a guess. I will say that the acceleration component along y-axis for this block is ay, and acceleration component along the x-axis for this block is ax. Right? I have no idea whether the directions I have chosen are correct or incorrect. I have absolutely no idea about that. But when I proceed further into the question, I should get clarity into whether I have chosen correctly or incorrectly. So now on the FBD, I can draw my axis and I can find the components. Remember that normal reaction always makes the same angle as the incline with the vertical, right? क्या बोल रही है? नहीं, नहीं, नहीं. So this component will be equal to n sine theta. This component will be equal to n cosine theta. And here now I can write the equation that n sine theta is equal to na. I'm not really interested in the y-axis wala equation because nobody has asked me what is the normal reaction applied by the ground on the wedge. अगर ये question होता, तो I would have been interested in the y-axis equation, but here I'm only interested in the x-axis equation.
Now for the second FBD, I draw the horizontal vertical axis, and I remember that the angle made by the normal reaction with the vertical is the same as that of the incline. So this component of normal reaction is n cosine theta, and this component of normal reaction is n sine theta. And immediately after drawing the FBD, I notice that I have chosen a wrong direction, because for the FBD of the block, I see that there is only one horizontal force and it is towards the left. Therefore, without any doubt, there must be an acceleration towards the left. Okay. If on an axis you find that there is only one force, then the object has to be accelerated along that particular axis in the direction of the force. So this assumption of AX is wrong, and I should assume AX in this direction. And let me just draw the acceleration here, AX and AY, like so. And now let me write the equation. Along the x-axis, I'm going to get n sine theta is equal to max. And along the y-axis, I'm going to get mg minus n cosine theta is equal to may. So I have got equation number 1, I have got equation number 2, I've got equation number 3. But when you look at equation number 1 and 3, what is the other immediate conclusion that you arrive at? What is the other immediate conclusion that you arrive at? When you look at equation number 1 and 3, what is the other immediate conclusion that you arrive at? Okay, you look at 1 and 3. N is same, theta is same, M is same for both the blocks, and therefore AX must be equal to A. Right? This is coming from equations 1 and 3. So now I can write again the 3 equations that I have to solve. Well, actually now I have to write only 2 equations. I have to write only 2 equations because n sine theta is equal to ma and n sine theta is equal to max, and a is equal to ax is really one equation. So we get n sine theta is equal to ma, and we get mg minus n cosine theta is equal to may. Right? So now how many unknowns do I have and how many equations do I have? Obviously, I have 2 equations, but the number of unknowns is still exceeding the number of equations. Right? The number of unknowns is still exceeding the number of equations. What are the unknowns here? The unknowns here are n is an unknown, a is an unknown, ay is an unknown. 3 unknown है और केवल 2 equation. So I will go back. Constraint equation निकालना पड़ेगा. So I will go back to the question, right? I will go back to the question and I will see that these 2 blocks are moving such that they are always in contact with each other. They never lose contact with each other. And if they never lose contact with each other, that means that if I were to draw a point on the block and a point on the wedge, and if I were to join these 2 points with a straight line, then the acceleration of the 2 blocks along this straight line must be same. अगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन वेज के एक्सेलरेशन से कम हो गया तो सेपरेशन हो जाएगा, और अगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन वेज के एक्सेलरेशन से ज्यादा हो गया तो ब्लॉक वेज के अंदर घुस जाएगा. बोथ आर नॉट अलाउड. Right? So if 2 surfaces are moving in contact with each other, then necessarily the surfaces in contact must move in such a way that
their accelerations perpendicular to the interacting surfaces must be the same, right? Otherwise, they are not moving in contact with each other. So I simply draw a replica of this yellow line here, and then I will say that this is the acceleration of the wedge, and this is the acceleration of the block. Right? I'll simply draw the acceleration vectors, and I need to find the component of these acceleration vectors along this yellow line, remembering that yellow line is nothing but the direction of normal reaction, and it makes an angle theta with the vertical. So this component will become ay cosine theta. This component will become a sine theta, and this component will become a sine theta. So the net acceleration of the wedge in this direction and the net acceleration of the block in this direction, they must be same. Okay, so acceleration must not only be same in magnitude, but they must be same in direction. So what does the constraint equation then give me? Right. So from the constraint, the constraint, remember, is that these two blocks are moving in contact with each other. We get a sine theta, this is the acceleration of the wedge along the yellow line, is equal to ay cosine theta minus a sine theta. Right, so let me just write this out for you. This is the acceleration component of wedge along the yellow line, and this is the acceleration component of block along the yellow line. Yeah. So from this, what do I get? Direction of act. Look at the blue arrows. That is why I've drawn the blue arrows. The blue arrow, the niche wala blue arrow, tells me the direction of acceleration of the wedge along the yellow line, right? And of course, this is the magnitude of the acceleration. Now, the acceleration component of the block along the yellow line is composed of two vectors, ay cosine theta pointing down and a sine theta pointing up, right? But since the acceleration of the wedge is down along the niche wala blue ka arrow, या black arrow आप ले लो, therefore the acceleration of the block must also be considered to be in the same direction, and therefore I can say that ay cos theta will be greater than a sine theta. Okay, so from here I get 2a sine theta is equal to ay cosine theta, and therefore ay is equal to 2a tan theta. And this is the relationship between ay and a, and this also tells me the third equation which is needed to solve these two equations. This is the third equation. So now I can 2 का factor आप नहीं लेके आ रहे थे ना. Now I can rewrite these equations as m sine theta is equal to ma and mg minus n cosine theta is equal to 2ma tan theta, right? And now I have a simultaneous equation and you can solve this. The method that I prefer is to multiply the upper
wala by cosine theta and the lower wala by sine theta. Right, simple elimination method that you have learned in class 10, and then you simply add them up, and when you add them up, then this and this will cancel out, and we'll get mg sine theta is equal to ma, common ले लिया मैंने, into cos theta plus sine theta tan theta. So a must be equal to m और m तो cancel हो गया, right? And I divide throughout by cos theta. So I will get g tan theta. मैंने कहीं पे 2 मिस कर दिया ना, कहाँ पे 2 मिस किया मैंने? 2 यहाँ आएगा, यहाँ पे 2 आएगा. Plus 2 sin theta tan theta. So g tan theta upon 1 plus 2 tan square theta. This should be the acceleration of. Now, what you need to do is you need to ask yourselves, ये आप लोग कहाँ पे अटक रहे थे? 3 distinct steps हैं यहाँ. पहला स्टेप है FBD बनाना, दूसरा स्टेप है ये F is equal to MA इक्वेशन लिखना. FA is equal to MA इक्वेशन लिखने के लिए ही हमको कुछ काम करना पड़ेगा. हमको एक्सेलरेशन की अज्यूम्ड वैल्यूज पहले से लिख लेनी चाहिए और डायरेक्शन भी. उसके बाद से हम अपने FBD पे एक्सेस बनाएंगे along the assumed direction of acceleration. हाँ, और देखा, हाँ आप, हाँ देखो, एक्सेस टिल्ट करने वाली बात जो होती है ना, so this is a very common case of confusion. Okay, so please listen to me carefully. So the statement that I used for the block was that I have absolutely no idea about the acceleration of the block. If I have absolutely no idea about the acceleration of the block, then it is safe to go for the standard horizontal vertical axis. अगर आप टेढ़ी एक्सिस लेना चाहो, you can do that. There will be absolutely no problems whatsoever. Okay, there will be absolutely no problems whatsoever. So you can choose a tedha axis, but I have chosen, when I prefer to choose horizontal vertical axis, if I do not know for sure what the direction of acceleration is. Which will be easier? Well, that depends on the question, right? That depends on the question. In this question, I think AX and AY will be easier. In fact, I'm going to show you in the next class. आज तो शायद नहीं हो पाएगा. In the next class, I'm going to show you another method in which you won't need to have 3 equations and 3 unknowns. This problem will be solved only by 2 equations and 2 unknowns. तो उस जो नया मेथड बताऊंगा उसमें आपको you don't have to do all these things. It is a shorter method. It's much more efficient method. But we have to do this as well, because you might get questions where this method has to be done. Okay, so should I move or should I give you one more question? Are you ready for one more? या फिर हो गया? लोड ले लिया बहुत ज़्यादा. One more. Are you sure? हाँ, बुकलेट पे सिग्मा NA वाला मेथड मैंने दिया हुआ है, but I find that sometimes this is better. सिग्मा NA वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं for wedge constraints.
So again, the question is find acceleration of wedge. ये वाला जो नीचे वाला wedge. All three objects have the same mass. किया हुआ है ये वाला. सबने किया हुआ है ये वाला. Everybody has done this. Okay. Okay. Find acceleration of
ये सेम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम भी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है ये। नहीं नहीं, टी नहीं आएगा आंसर में, नहीं टी कहाँ से आएगा? हाँ, शौनक ने अब सही जवाब दिया। कितना कम पड़ रहा है शौनक? तो कहाँ से आएगा वो? नहीं, हाँ, यस यस यस, खुद ही को साथ लेना पड़ेगा। नहीं,
नहीं 5 इक्वेशन पार्थ कितना 5 इक्वेशन ले आया क्या? मेरे ख्याल से 4 ही आता है शायद, या हो सकता है 5 आता हो, क्या मालूम। ओह देख के ही डर लग रहा है। तो ये इसका एफबीडी पहले बनाते हैं। एम जी टी एन, और फिर इसका एफबीडी बनाते हैं एम जी एन डैश एन टी टी. So how many of you got the FBT correct? Good. Now what can we say about the wedge? What can we say about the wedge? What can we definitely say about the wedge? Definitely we can, answer is very long, yes. We can definitely say that the acceleration of the wedge will be A, horizontal. And for the block, since that happened in the last question as well, I am going to take AY and AX like this. So here my axis will be like this. Remember that N makes an angle theta with the vertical. So this must be N sine theta. And T is parallel to the incline. So it must make an angle theta with the horizontal. So this must be T cos theta. Again, I'm not interested in the y wala equation because that will introduce another variable n dash, which I don't want to deal with. So for this, the equation that I'll write down will be t into 1 minus cosine theta plus n sine theta is equal to ma. Right? T into 1 minus cos theta plus n sine theta is equal to ma. Correct? या है सबको समझ में ना? फिर ये वाले ब्लॉक के लिए मेरे पास ये एंगल थीटा रहेगा, ये एंगल थीटा रहेगा. So this will be t cosine theta. Here I'll get t sine theta. I'll also get n cosine theta, and I'll get an n sine theta. So along the x-axis, I'm going to get n sine theta minus t cosine theta is equal to max. And along the y-axis, I'm going to get mg minus t sine theta minus n cos theta is equal to my. How many equations are these and how many unknowns do we have? Well, they are big equations. Number one, that is not good sign ever. And the number of unknowns that we have, let's count them. P is unknown, N is unknown, A is unknown, AX is unknown, AY is unknown. So we have 5 unknowns. Yeah. Parse बोल रहा था 5 unknowns हैं, 5 equations. अब सर हाँ इसमें स्ट्रिंग और वेज कंस्ट्रेंट लगेगा ना? हाँ बिल्कुल लगेगा, तभी तो आएगा ना और 2 इक्वेशन. So now we want to get at 2 more equations because Newton's laws अब exhaust हो गया.
न्यूटन्स लॉज की कहानी खत्म हो गई, और न्यूटन्स लॉज हमको आंसर नहीं दे पाए, ठीक है ना। न्यूटन्स लॉज हमको आंसर नहीं दे पाए, they could not tell us the acceleration. uh, yeah, one thing I can see, क्या बोल रहा है हार्दिक, कुछ मल्टीप्लाई करने से कुछ आसान हो रहा है क्या? One thing I can see is multiply the first equation by cos theta and the second equation by, हाँ हाँ अभी करते हैं ना, अभी करते हैं, लेकिन आप कुछ भी कर लो इसमें आपको फिलहाल आंसर नहीं मिलने वाला है, बिकॉज द नंबर ऑफ इक्वेशंस इज ग्रेटर इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन. Okay, so what we want to do is we want to talk about the string constraints first, and then we want to talk about wedge constraints. So for the block, okay, for the block, the tension is like this and the acceleration is like this. For the wedge, for the wedge, uh, tension is like this and acceleration is like this, right? And we know that dot product of tension and acceleration, the summation of dot product of tension and acceleration, Ti dot Ai is equal to 0. तो फर्स्ट वाले में जब मैं टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, मेरे को बस ये ध्यान रखना है दैट दिस एंगल इज थीटा. सो दिस विल कम आउट टू बी, पहले ax के साथ निकालते हैं, तो टी ax इंटू कोसाइन ऑफ पाई माइनस थीटा विच इज माइनस माइनस टी ax कॉस थीटा. फिर ay के साथ निकालते हैं, तो ये आएगा टी ay इंटू कॉस ऑफ 90 plus theta. And what is cos of 90 plus theta? याद है किसी को? तो पढ़ाते हैं ना, इसमें मैथ्स में आता है ये साइन थीटा प्लस ये हो गया टी डॉट ए फॉर दिस, टी डॉट ए फॉर दिस प्लस वी वांट टी डॉट ए फॉर दिस. दिस शुड बी इजी. यहाँ पे टी कॉस थीटा आने वाला है, तो ये आएगा टी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू ए. This is t dot a for this. This is equal to 0. Of course, t वाला टर्म हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा ए वाई साइन थीटा माइनस ए एक्स कोसाइन थीटा प्लस ए इंटू 1 माइनस कोसाइन थीटा. हाँ, क्या ए वाई क्या होएगा? ए वाई माइनस होएगा क्या? आई डोंट नो, पता. तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज ये वाला टेंशन डॉट प्रोडक्ट विथ ये वाला एक्सेलरेशन, cos 90 plus theta is minus sin theta. Okay, minus is equal to 0. ठीक है, ये एक बड़ा सा इक्वेशन आया फॉर द string constraints. Next, we want to talk about the wedge constraints. Please remember that this is
a long method. Okay? It is a long method. I will show you an easier method, but the easier method that I will show you reduces the number of equations by just one. Okay? It reduces the number of equations by just one. और भी थोड़ा लाइफ इजी कर सकता है. A wedge constraint में we have the wedge and the block moving together. So I draw 1 point, and I draw a straight line. I draw a straight line. The acceleration of the wedge is A, and acceleration of the block I will assume to be AX and AY. Remembering that this angle is theta, this component will be A sine theta, this component will be AY cosine theta, this component will be AX sine theta. So wedge constraint से जो equation आएगा वो आएगा A sin theta is equal to AY cosine theta minus AX sin theta. Right. Now remember that our purpose is to find A. Okay. Our purpose is to find A. So what I want to do is I want to rewrite this equation here. I want to rewrite this equation here. यहाँ पे लिखते हैं A1 minus cos theta is equal to AY sin theta plus AX cos theta. Right? ये equation आएगा AY sin theta, AX cos theta. So what I want to do is I want to solve this simultaneous equation, right? Assuming that AX and AY are variables, and I want to get AX and AY in terms of A. Hopefully I'll end up with something more manageable. नहीं तो ये 5 इक्वेशन सॉल्व करने में कल तक का टाइम हो जाएगा. इसको कैसे सॉल्व करेगा? Anybody has an idea? So I think I'll use the elimination method. ये सबसे बढ़िया लग रहा है. तो यहाँ पे इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं cos थीटा से. तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा. यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा. इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा से. तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा. ओह, दिस इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग. So what is happening is that when I add these two guys, ये तो उड़ गए as was expected. यहाँ पे केवल AY बचा और यहाँ पे भी A cos थीटा, A sin थीटा सब उड़ गया. और oh, look at this one. Very nice. AY is equal to A. AY is equal to A. And if AY is equal to A, then what is the value of AX? Well, AX sine theta is equal to AY cos theta minus A sine theta. This implies that AX is equal to A into cot theta minus 1. देख लो भाई सही किया है या नहीं किया है. होता है गलत हो. Am I okay? Am I right? So I've just put AY is equal to A in the first equation, and I have found the value of AX. सही किया है. I think सही लग रहा है मेरे को. Okay, so once I've done this, what I can do now is I can go back to these set of equations, which I think I can also handle. It is not going to be that bigger problem. तो पहला इक्वेशन है मेरे पास n sin theta minus
t cos theta is equal to max. I hope I'm correct. N sin theta minus t cos theta is equal to max. But ax is equal to a into cot theta minus 1. Second equation that I have here is mg minus t sin theta. So this is mg minus t sin theta plus है कि minus है minus n cos theta minus n cos theta is equal to may, but that is ma, right? And you see what has happened now. I don't really need to write the third equation. Well, I'm going to write it, but I don't really need to write it anymore. So, नहीं लिखना पड़ेगा ना, सॉरी तीन तीन अननोन, हाँ ए निकालना है मेरे को. T into 1 minus cosine theta, and here we have n sin theta is equal to m plus n sin theta is equal to m. Right, now I'm just wishing that something would happen that I just add all these three terms और ये इतना n और t है लेफ्ट हैंड साइड में, सब गायब हो जाए, सब भाड़ में चला जाए. Can you think of doing something like that? सर हम नीचे वो जो टी वाली इक्वेशन है टी माइनस टी कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा है, वो उससे हाँ, ऊपर वाली इक्वेशन से रिप्लेस कर सकते हैं. ऊपर वाली इक्वेशन से रिप्लेस कर सकते हैं मतलब? हाँ सर, वो जगह टी टी प्लस एम ए कॉट थीटा माइनस 1 इक्वल टू एम ए, उससे फिर आगे सॉल्व कर पाएंगे शायद. नहीं, वो तो तेरे को टी के टर्म्स में एक इक्वेशन आ जाएगा ना, वो तो दिखाई टी दे और ए रहा है. के टी और ए ही टी और ए बचेगा के एक. टर्म्स में, हाँ हाँ हाँ. लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये तीनों इक्वेशन में क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा करें कि लेफ्ट हैंड साइड जब मैं ऐड करूं तो एन और टी पूरी तरीके से गायब हो जाए. सर ऊपर में कॉस थीटा, दूसरे वाले में साइन थीटा, ऐसा. ये तो सोचना है ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ भाई. अब तो गेम जो है मैथ्स का बचा है ना. अब तो फिजिक्स तो बहुत पहले खत्म हो चुकी थी. अब सर तो गेम मैथ्स है. हाँ, एक सेकंड इक्वेशन में साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे एंड थर्ड इक्वेशन में कॉस थीटा. उड़ जाएगा फिर सब कुछ. सर एन एन तो कट जाएगा एंड एक टी भी कट जाएगा और फिर वो टी हम लोग रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड. नहीं, फिंगर्स क्रॉस वाला काम नहीं करता. सॉलिड काम बताना मेरे को. सर थोड़ा सोचना पड़ेगा वो. तो सोचना, तभी तो दिमाग तो इसी में लगाना है. हाउ टू डू इट most quickly and efficiently. How to do it most quickly and efficiently. If I can create a situation in which the left hand side will become divide the first by cos theta, ठीक है, फिर क्या करेंगे, कुछ ही पहला cos theta से डिवाइड कर दिया. अब सेकेंड बाई साइन थीटा, तो एक में आएगा n tan थीटा और दूसरे में आएगा n cot थीटा. नहीं, पहले वाले इक्वेशन में n tan थीटा आ जाएगा, दूसरे वाले में n cot थीटा आ जाएगा. तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो तो नहीं उड़ने वाले हैं, वो तो नहीं खत्म होने वाला है. नहीं, हाँ, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. हाँ भाई हार्दिक, आइडिया बता भाई कुछ.
सर टेंशन को एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं सर कि एन को सब्स्टिट्यूट कर सकते नहीं हो। नहीं नहीं, मेरे को टेंशन और एन सब एक साथ एलिमिनेट करना है। मेरे को टेंशन और ये एक साथ एलिमिनेट करना सर तो फिर अगर है। हम चलो ऐड करके अगर ऐड भी करते हैं तो एम ए भी तो कट जाएगा ना। एम ए साइन थीटा बच जाएगा एम ए फिर। कैसे कटेगा भाई? एम ए और एम ए ऐड करेगा तो 2 एम ए आ जाएगा ना। नहीं सर वहाँ पे बट फर्स्ट इक्वेशन के आरएचएस में एम ए कॉट थीटा माइनस एम ए है ना, तो एक एम हाँ, ए तो कटा जाएगा। तो एक सर एम बट ए अगर कॉट हम पहले वाले को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा। सर नीचे वाले को कॉस थीटा से, फिर तो सर माइनस एन कॉस टू थीटा बन जाएगा अगर ऐड करते हैं बाद, सब्ट्रैक्ट करते हैं बाद में तो। सर टी को कैंसिल करना है सर। मैंने टी और एन दोनों को उड़ाना है भाई। अच्छा आगे आ रहे हैं। तो आर्यन में सर आंसर आ गया। सर फर्स्ट और थर्ड को कॉस फर्स्ट या थीटा से सेकंड मल्टीप्लाई करते हैं एंड सेकंड को 2 साइन थीटा से। वेरी नाइस। फर्स्ट और थर्ड वही को बोल रहा था सर, मुंह की बात छीन ली। कॉस थीटा। मुंह की बात छीन ली तेरी। फर्स्ट और थर्ड को किससे मल्टीप्लाई करें? कॉस थीटा। कॉस थीटा से। सो कॉस, रुको मैं दूसरा कलर चूज करूँ। कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा। हाँ, और किसको कॉस थीटा से? थर्ड वाली को। थर्ड वाले। कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। हाँ, अब क्या करूँ? सेकंड वाले को 2 साइन थीटा से। वेरी नाइस। 2 साइन थीटा से इसको करते हैं। 2 साइन थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 2 साइन थीटा हो जाएगा। हाँ, अब कैसे उड़ रहा है बता मेरे को। फिर सबको ऐड करेंगे। सबको ऐड करेंगे तो n कोसाइन थीटा साइन थीटा माइनस 2n कोसाइन थीटा साइन थीटा प्लस n साइन थीटा कोसाइन थीटा, ये गायब हो गया। ठीक है। इसके बाद से सर फिर टी वाले में -2t कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और सेकंड इक्वेशन में है -2t साइन स्क्वायर थीटा। वो तो माइनस t हो जाएगा। नहीं, t कॉस स्क्वायर थीटा माइनस t साइन स्क्वायर थीटा माइनस t हो जाएगा। और माइनस टी तेरा यहाँ पे टी कॉस थीटा माइनस टी कॉस स्क्वायर थीटा है ना। नहीं उड़ा, गड़बड़ कर दिया भाई तू। बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा था लेकिन गायब हो गया। हाँ भाई, हार्दिक बोलना, बोलना है तो। नहीं बोलना है तेरे को? सर वो ठीक है सर, पर हम खाली पहले फर्स्ट और थर्ड को कॉस से मल्टीप्लाई करके कर हाँ, सकते हैं था। वो तो कर ही सकते हैं। वो तो टी को एक बार जो है हम एक बार एलिमिनेट करेंगे टी को, टी और ए के टर्म्स में आएगा, और फिर दोबारा करेंगे और फिर हमारे पास केवल टी और ए के दो इक्वेशन आ जाएंगे, फिर हम सॉल्व कर लेंगे। I'm not saying that. I'm saying that is there a term that I can multiply or divide such that मैं LHS को ऐड करूंगा तो सब गायब हो जाएगा। एक मिनट सर ये मेरा सवाल है। सबको जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वाह शौनक, एकदम सही जवाब तेरा। सबको जीरो से मल्टीप्लाई करना है, फिर जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया, कहानी खत्म हो गई, है ना। वाह, चलो ठीक है। आई विल गिव यू अ हिंट। ये 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? याद है किसी को? 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू
1 minus 2 cos, नहीं, उल्टा लिख दिया शायद, 2 sin थीटा बाई 2 होता है ना, हाँ, एक ही बार में लिख देता हूँ, 1 minus cos theta is equal to 2 sin theta by 2, 2 sin square theta by 2, 2 होता है ना पक्का, फैक्टर होता है ना 2 का बाहर, है ना। ये हिंट है, अब आप अपने आप करो, यहाँ पे 2 sin square theta by 2 आ जाएगा, यहाँ पे sin theta है, राइट। कैसे इसको एक बार में मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आए, आई एम नॉट गोइंग टू, अब मैं कर रहा हूँ। Okay, so this was a question in which the string constraints and the wedge constraints were simultaneously applied, and you are going to get questions like this, but like I said, I will show you a superior method of solving these questions which should become which should make these questions easier. Okay, so we want to move on now. We want to move on to the concept of weight. Okay, अब weight क्या होता है, पहली चीज, what is weight? What do you understand by weight? अब जो difficult part था वो चला गया है, easy part आ रहा है. Very good, yes. सुबह वाली क्लास भी करी थी क्या? हाँ, तो इसमें जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है वेट के बारे में, वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, and I want to show you the actual meaning of weight. And weight is not, or at least it is not completely defined by saying that weight is equal to mg or weight is equal to the gravitational force on us. Okay, that is an incorrect statement, or at least it is an incomplete statement. Weight can be equal to mg, definitely. Weight may be greater than mg, weight may be less than mg, and it may happen that weight may be 0. It may also happen that weight is negative, because ultimately weight is a vector quantity, it is a force, and it is a vector quantity. It has both magnitude and direction. Now, unfortunately, the terms mass, weight, force, ये हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं, और इसलिए ये जो मीनिंग होता है वो कभी कभी ओवरलैप कर जाता है, एंड यू नो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. सो वी मस्ट we must have knowledge of the actual definition of weight. Okay? तो actual definition क्या है कि अगर मैं एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हूं तो मेरे को मेरा वेट पता चल जाएगा. अगर मैं एक स्प्रिंग बैलेंस से लटका हुआ हूं तब मेरे को मेरा वेट पता चल जाएगा. तो ये जो वेइंग मशीन है और जो स्प्रिंग बैलेंस है, ये क्या मेजर कर रहे हैं? which quantity is being measured by the weighing machine and which quantity is being measured by the spring balance? So it turns out that weight is a measure
measure of normal reaction or tension. अगर मैं स्प्रिंग बैलेंस से लटका हूं तो जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है that is equal to the tension in the string. और अगर मैं वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ हूं तो I am applying a normal reaction on the weighing machine. Normal reaction of course is applying weighing machine is applying a normal reaction on me, but it is this mutual normal reaction that we have applied on each other which is being measured by the weighing machine. Right. So if I keep a weighing machine on a horizontal flat surface, which is what happens, you will get the weight as mg. But if you were to keep the weighing machine on an inclined plane of angle theta, in that case the weight would come out to be mg cosine theta. And in this case, weight would be equal to mg, since normal reaction is equal to mg. Since normal reaction is equal to mg cosine theta. So weight is the measure of normal reaction that you apply on the weighing machine, and or it is the tension that you apply on the spring balance. So I would like to give you an example. So if we have a lift in which we have kept a weighing machine, right? And if I were to simply draw a free body diagram of this person, then the forces acting on this would be mg due to earth and normal reaction due to the surface of the weighing machine. It is my contention that this n is the weight of the person and this mg is not the weight of the person. Mg may be the weight of the person, but n is always the weight of the person. So let's say that the lift is going up with an acceleration of a. So in this case, we will write n minus mg is equal to ma, and therefore n will be equal to mg plus ma, and this will be the weight of the person. So while going up in a lift, you will find that your weight increases. But this increase of weight is only up till the point that the lift is accelerating. The moment the lift goes into constant velocity, the value of normal reaction will again become equal to mg, and we will say that you have regained your normal weight. Okay, whenever I say normal weight or actual weight, I mean mg. Normal weight and actual weight are mg. So if you go up in a lift, you will feel heavier, and you can try it. You can try it out today. Go inside your lift, ऊपर वाले फ्लोर का बटन दबाना है, and start walking inside the lift. Before the lift begins to move, start walking inside the lift, and as the lift accelerates upwards, you will definitely feel heavier. Okay? Your steps, when you take a step while the lift is accelerating, you will definitely feel heavier. Right? What happens is that when normally you go inside a lift, you're just standing there and the lift accelerates upwards. So थोड़ी सी feeling आती है, but ज़्यादा नहीं आती है. But if you start walking, then you'll definitely see the effects. You'll definitely feel the effects. They are significant. If the acceleration of the lift is let's say 3g, then normal reaction will be 4mg, right? हाँ, अभी मैं कभी आते हैं उसमें टेंशन वाले पे अभी मैं आ रहा हूँ.
पहले मैं नॉर्मल रिएक्शन का बता रहा हूँ. So if the acceleration of the lift is 3g, then the weight will be 4 mg, 4 times the normal weight. And this in standard English or standard scientific English is called G-force. You would have heard of G-force in reference to fighter pilots and in reference to astronauts who are going up the up on the rocket. So what is this G-force? Well, it is very simple. If the rocket is going up, or if the aeroplane is accelerated in such a way that the vertical component of, or any component really of acceleration is 3g, then the weight of the person will become inside that plane, inside that lift, inside that rocket will become 4 mg. तो आपका जो भी एक्टिविटी है, सपोजिंग आपको अपना हाथ ऊपर करना है और आपका हाथ नॉर्मली 3 किलो या 5 किलो वे करता है, तो अब आपका हाथ जो है वो 4 times that वे करने लगेगा, right? So your hand will like literally be 20 kilograms. So you'll be lifting your hand and your muscles will have to lift 20 kilograms now. If this goes beyond a certain point, then there is a problem, and the problem is that beyond around 7 to 8 G, for some people it may be a couple of G's higher, the weight will become so much that when you breathe, the chest will not go up and the lungs will not get filled up with air, and that's it, right? That's the end of the story. So to avoid this, you will find that these fighter pilots, they have this mask where the mask will pump in the air in case the value of G becomes very large. तो अगर आप सांस नहीं ले पाओगे, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो पहले आप फेंट होगे और उसके subsequently then you will lose your life. So when a fighter pilot ejects from the plane, right? हमने movies में देखा है कि वो eject कर गया भाई. तो जब एक fighter pilot eject करता है plane से, so that fighter pilot experiences a huge amount of G-force. Acceleration of the fighter pilot is very, very large because from inside the plane you're going outside, and that rocket inside the ejector seat is actually pushing you up. So the G-force is very large, and most of the pilots actually faint in that duration. Right? So it is not as जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं अपना तो eject हुआ और बाहर आके और मस्ती से आपस में बात कर रहे हैं, पैराशूट से नीचे उतर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. They will normally faint. This of course means that many of your favorite comic characters are completely bogus. For example, Iron Man. अब Iron Man अगर अपने सूट में उस acceleration से upward जा रहा है, तो वो तो इतने ज़्यादा G-force उसको लगेगी कि वो पिचक जाएगा, वो 3 फुट का बन जाएगा, उसका कुछ नहीं बचेगा, कचुम्बड़ बन जाएगा उसका. Right? I mean, it is literal. If you have A is equal to 9g, your weight will be 10 times the normal weight. So if you have a weight currently of 60 kilograms, it will become 600 kilograms, right? And your legs and your muscles will not be able to hold that kind of weight, and of course they will break. They will just give way. I don't know, सुपरमैन को दिखाते हैं कि वो जा रहा है और अचानक से मुड़ गया. अगर वो अचानक से मुड़ गया या आयरन मैन भी अचानक से मुड़ गया,
So the acceleration required is huge, and the g forces generated will be huge, right? And that's it. End of story for both of them. साइंस फिक्शन में वो स्पेसशिप है, वो अचानक से स्पीड ऑफ लाइट पे चली जाती है ना? अचानक से स्पीड ऑफ लाइट में अगर कोई स्पेसशिप गई तो बैंगन का भरता मिलेगा, स्पेसशिप रुकेगी तो you will not find anything relatable to a human being in that spaceship, right? So हाँ, सब कुछ टूट टाट जाएगा, हाँ. So it is a very very dangerous phenomena. And when you design a rocket, for example, SpaceX has designed a rocket to launch astronauts to the International Space Station and beyond. They have to be very careful that the G forces do not exceed a particular value, and therefore you cannot leave the atmosphere very rapidly. ऐसा नहीं है कि कल को कोई ऐसा रॉकेट बनाएगा कि हम रॉकेट में बैठे और बटन दबाया और 2 सेकंड में ऊपर पहुंच गए. Not possible. The opposite, when the acceleration of the lift is down, you will have mg minus n is equal to ma, and therefore n is equal to mg minus ma, right? And this means that as you come down, the weight reduces, and if a is equal to g, then n will be equal to 0. This implies that your weight will be equal to 0, and this implies that you will be experiencing weightlessness. Okay, so this is another misconception that people have. If you are in a lift which is falling down with an acceleration of g, then your weight will be 0. Your mass will not be 0. Gravity will not be 0. Your weight will become 0. And that is why, you will feel very light, and your bodily functions will not be able to handle themselves, and it will generate sort of an alarm from the brain. And this is what we make use of when we design roller coaster rides. So if you have been to iMagica, the reason why you feel exhilaration, the reason why you feel excited on the rides is that at one moment they will make you experience positive G, and at the other moment they will try to make you experience 0G. And when you experience 0G, तो आपके जो भी internal organs हैं जो function कर रहे हैं वो properly function नहीं करते हैं, तो brain से chemicals pump होते हैं. Anybody know the name of the chemical? Actually brain से नहीं होते हैं, but हाँ ठीक है. Anybody know the name of the chemical? It is called adrenaline. Adrenaline is pumped to make the body absorb the shock. ये gravity कहाँ गई भाई? ये क्या हो रहा है? So this is called weightlessness. Now, if somebody tells you, and this is also called 0G. This is also called 0G. Somebody tells you that International Space Station में gravity 0 है, right? That is a wrong, very blatantly wrong statement. Because remember, gravity is given by gmm by r square, right? तो हमारे और स्पेस स्टेशन में ज्यादा फर्क नहीं है. हमारे ऊपर जो फोर्स लग रही है वो gmm बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर लग रही है, और जो स्पेस स्टेशन पे फोर्स लग रही है वो gmm बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 400 किलोमीटर होल स्क्वायर की फोर्स लग रही है. Now, since the radius of the Earth is 6,400 kilometers, the difference between the G force, between the gravity that we are experiencing and the gravity that the International Space Station is experiencing is not very large.
difference is not very large, perhaps maybe I don't know 10-20% का फर्क होगा. तो अगर यहाँ पे g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उसकी वैल्यू आई डोंट नो 9 और मे बी 8 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगी, राइट? बट they are continuously falling towards the earth. They are basically in a lift whose acceleration is g, and therefore they are experiencing weightlessness. They are experiencing zero g. Zero g does not mean zero gravity. Zero g means that the normal reaction has become zero. So why don't they fall to earth? Well, they do fall to earth. But the thing is that they are so high up that by the time they fall down, the earth below, because the earth is curved, the earth below has curved away from them. Literally. So it is like आप एक हाथ में बॉल रखो, दूसरा हाथ उसके नीचे रखो, leave the ball, and your second hand, your other hand is trying to catch the ball, but you don't just catch it. You make your hand accelerate downwards such that the ball is always coming towards your hand but not quite touching it, because your hand simply moves further down जहाँ पे बॉल उसको रीच नहीं कर पा रही. तो उसी तरीके से जब एक स्पेस स्टेशन या सैटेलाइट तो हम उसको ऑर्बिट में डालते हैं, तो हम उसको एक we will discuss this when we study gravitation, हम उसको एक horizontal velocity दे देते हैं ताकि वो गिरता रहे. गिरना है ही है उसको, बट वो horizontal velocity की वजह से जब तक वो गिरेगा नीचे तब तक अर्थ का कर्वेचर नीचे कर्व कर जाएगा, right? So it is continuously falling and therefore we experience weightlessness inside this. हाँ, if A is greater than G, तो हम लिफ्ट के ऊपर सरफेस में जाके चिपक जाएंगे and our weight will become negative in the sense that the direction of the force vector, the direction of the normal reaction will change, right? So this is the concept of weight, and the similar thing and a similar thing can be done by saying that, look, this is a spring balance, right? And a person is sort of hanging from the spring balance like this. So if I were to draw a free body diagram of the person, in this case tension T आ जाएगा ऊपर, नीचे mg आ जाएगा, और अगर इसका acceleration ऊपर की तरफ है, तो again we'll write T minus mg is equal to ma. Therefore T will be equal to mg plus ma. And again, if the acceleration is downwards, then we'll get the same relation, mg minus T is equal to ma. And therefore T is equal to ma minus mg minus, right? So in this case, the tension is measuring the weight of the person, right? And I hope all of you have seen a spring balance. जो गैस सिलेंडर वो लेके आता है उसके पास स्प्रिंग बैलेंस रहता है. लास्ट क्लास में somebody told me that जो पेपर लेने आता है, जो रद्दी वाला पेपर होता है वो लेने आता है, उसके पास स्प्रिंग बैलेंस होता है. Many vegetable vendors use spring balances. So the way to use, what if a person is hanging with one leg? इसका क्या मतलब हुआ भाई? मतलब टांग से लटका हुआ है. अच्छा, what if a person is hanging with one leg just touching the ground? Weight will be n or t. Very good. So in this case, weight will be whatever the spring balance is measuring, whatever the weighing machine is measuring. Right? It will be a combination of both. It cannot be just T and just N.
स्प्रिंग बैलेंस कुछ मेजर कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कुछ मेजर कर रहा है. You notice that if this person is actually on the floor, then the free body diagram you'll get T plus N ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ. So it is T plus N now that is measuring the weight. It will have to be the reading on the spring balance and the reading on the weighing machine. Combined will give you the weight. Okay. So this is the concept of weight. Please never confuse it with T plus N बच्चा. ये देखो ना FBD जो मैंने बनाया है. Look at the FBD that I have drawn. हार्दिक वीडियो क्यों ऑन किया है तूने? वीडियो ऑन किया है तो शक्ल दिखा दे अपनी. T plus N will be the weight. अरे बाप रे, गला दर्द हो गया भैया बोल बोल के यहाँ पे. ओके ठीक है. चलो, so I will leave you now. मेरा हो गया. We'll continue in the next class. मेरे को 2-3 क्लास लगेगा 2 घंटा आदत डालने में. हाँ 1 मिनट रुको. हाँ प्रतीक्षा बोलो. सर जब भी हम रिलेटिव कर रहे थे तभी आपने बोला था कि अगर मतलब जैसे किसी चीज़ को पैराशूट से ड्रॉप किया तो उसका वो एक्सेलरेशन वो बॉल या जिस भी चीज़ है उस पर इम्पार्ट हो जाता है, तो हम कभी भी उसको g प्लस ए या ऐसे g माइनस ए नहीं लेते थे. हाँ बिल्कुल यहाँ पे सही. जब ये n इज इक्वल टू m टाइम्स g प्लस ए है तो हाँ वो g प्लस ए उसका ओवरऑल एक्सेलरेशन नहीं है. है, नहीं उसका एक्सेलेरेशन ए. तो कभी भी अगर ए और जी अलग से आ रहा हो तो उन दोनों में कभी कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. नहीं तो हमेशा एक्सेलरेशन एक की ही जब मैं रहेगा. बात करूंगा मैं बोलूंगा लिफ्ट इज मूविंग अप टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. That does not mean that the lift is moving with 2 meter per second square upwards and gravity is making it go down 10 meter per second square downwards. No, जी सर. है ना, ऐसा नहीं सोचना है. इसका वो नेट एक्सेलरेशन है upwards. क्योंकि मेरा डायग्राम इनकम्प्लीट है. यहाँ पे एक और रस्सी होनी चाहिए. इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगी है पूरे सिस्टम के ऊपर, जिसकी वजह से ये सिस्टम ऊपर जा रहा है. हाँ होमवर्क में भाई लेक्चर 5 आई थिंक वेट वाला है, उसको शुरू करो, उसको खत्म करो. होना चाहिए सबका. अभी मैंने सब कुछ करा दिया है. और मॉड्यूल होना चाहिए और जो असाइनमेंट्स जो लेक्चर 5 तक के ये हो जाना चाहिए. ठीक है. ओके. अच्छा अब क्या है कि आई विल एंड दिस मीटिंग. ओके. And then Himanshu sir will send you a new ID at 6:15 or 6:30, and then you are supposed to join with that new ID. Okay, right? Maths class है ना इसके बाद? हाँ. Okay. चलो. होमवर्क बताया ना मैंने लेक्चर 5. हाँ नीले अभी स्लाइड्स में शेयर करता हूँ. चलो बाय बाय.